Hello, future doctors. So, I'm your Ujjal sir, medical mentor and founder and director of the Engineers Gurukul. Yes, right now we have come down to the last topic of this particular chapter called the excretory system, and the topic is disorders. So, dear students, disorders is a very important topic, and mind you, all of us we have got this kind of disorder. Fine, we have got some disorders in us, है ना? है नहीं है बच्चों, है ना? तो चलो देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या disorders है. What are the disorders in excretory system? So disorders of excretory system, number one, that is there in your book. पर कुछ बुक के बाहर हम जाएंगे, which is very important. Uremia. Emia means what? Emia means blood. We have talked about this in RBC. Uremia. So when something is there inside blood, what is urea? Accumulation of the urea. So urea stands from urea. So accumulation of urea in blood due to malfunctioning of kidney. अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगा तो यूरिया accumulate हो जाएगा, यूरिया निकलेगा नहीं बॉडी से. So ये यूरिया आस्ते आस्ते it is going to get accumulated in the blood. Blood में वो जम जाएगा, it is going to get accumulated and ultimately form into uremia. Okay, the first topic of NCERT. Now the next topic is renal failure. Renal failure आप जानते हो जब the kidney stops working. Now by renal dysfunctioning, syndrome characterized by renal dysfunctioning. जब renal functioning disrupt हो जा रहा है, when there has been some disruption in the renal functioning, we call it as renal failure. Now what is the remedy? Remedy, kidney transplantation is the only remedy. अगर renal failure हो जाएगा तो kidney transplantation only remedy है. हाँ, और ये हम किससे लेंगे? ये किडनी अगर हमें चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, क्योंकि क्लोज रिलेटिव में एंटीजेंस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बहुत कम होगा. फाइन, सो किडनी रिजेक्शन का चांस घट जाएगा. सो किडनी रिजेक्शन, क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज किडनी रिजेक्शन बाय इम्यून रिस्पांस ऑफ द होस्ट, बाय इम्यून रिस्पांस ऑफ द होस्ट. नाउ यही इसलिए if somebody gives one kidney to the other, so ये host body में अगर एक किडनी मिला किसी से, किसी ने दिया, डोनेट किया, तो होस्ट बॉडी को जिसके बॉडी में ये जाएगा उसको थ्रू आउट द लाइफ हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए एक ड्रग थ्रू आउट द लाइफ उनको लेना पड़ेगा. कमेंट मी, आई डोनेशन, is it eye donation? Eye donation में, is it eye donation? Number one question, is it eye donation or it is some part of the eye which is being donated? What is that part? If it is some part, what is that part which is being donated in eye transplantation or eye donor? Eye donor में क्या host को immunosuppressive drugs लेना पड़ता है? That is my question. Comment me. बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन में तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेना पड़ता है, और वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए. एंड दिस साइक्लोस्पोरिन ए इज द ड्रग व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फंगस नेम्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. देखो मैं ट्राइकोडर्मा बोल रहा हूं तो ये कुत्ता भौंक रहा है. हाँ, उसको भी चाहिए ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, it is there in class 12 page 183. class 12 के बुक में, definitely old book में, पेज नंबर 183 में, just go through it. अगर आपके पास बुक, I should recommend you class 11 students, you should have class 12 book in with you. अभी ये खरीद लो ये book. So Trichoderma polysporum is the fungus which can create a particular drug called cyclosporin A. ये throughout the life इस आदमी जिसके अंदर ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उनको लेना पड़ेगा. ओके, क्यों? ताकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे, ताकि वो किडनी को रिजेक्ट ना कर पाए. द थर्ड डिसऑर्डर इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. आइटिस मतलब क्या है? व्हाट इज आइटिस मींस? आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इट्स देयर इन योर एनसीईआरटी. Glomerulus का inflammation due to some infection. Where? Infection in the basement membrane. Infection in the basement membrane. तो इसको क्या कहेंगे? Glomerulonephritis. Okay. Then the fourth one is renal calculi.
What is the meaning of calculi? Now, my dear students, calculi ये word तो आप मन में गांथ लो, क्योंकि ये calculi मतलब stone होता है. The calculi means stone. Now, stone inside kidney is called ureolithiasis. The term lithiasis means stones. So my next question to you, अगर किडनी में स्टोन होगा तो यूरोलिथियोसिस, किडनी में स्टोन होगा तो यूरोलिथियोसिस. What is that term called when the gallbladder contains stone? What is that state called, condition called, when the gallbladder contains stone? Comment me in the comment section. Comment me in the comment section. Gallbladder stone is called. Okay. Waiting for your reply. Okay. Now, formation of calculi. Calculi मतलब stone है in the urogenital tract at any point. Okay. Calculi are produced by calcium phosphate. They are produced by calcium phosphate. ये stone बनता कैसे है? ये स्टोन बनता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड से, अगर मैल फंक्शनिंग होगा किडनी का तो डेफिनेटली कैल्कुली होने का चांस है, और अगर पानी कम पीते हो तो रीनल कैल्कुली होने का चांस ज्यादा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नेफ्राइटिस. फिफ्थ वन, नेफ्राइटिस. अगेन आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस. Streptococcus is the name of the bacteria. Streptococcus. Again, comment me in the comment section. What is the shape of coccus? What is the shape of coccus? Coccus bacteria का shape क्या है? Pyelonephritis. What is this? Pyelonephritis. Again, itis. Itis मतलब inflammation. Inflammation of tissues of kidneys and ureters in the pelvic region. In the pelvic region. Pyelo. The term related with ureter. Term related with ureter. नेक्स्ट इज एल्कैप्टोन्यूरिया. ये क्वेश्चन मैंने आपको आरबीसी टॉपिक में पूछा था. फाइन, ये स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हो तो जस्ट प्लेलिस्ट में देख लेना. आरबीसी एल्कैप्टोन्यूरिया, व्हाट इज इट? इट इज अ जेनेटिक डिजीज इन व्हिच होमोजेनेटिक एसिड, याद रहे ये टर्म. व्हाट इज द टर्म? होमोजेनेटिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट विद यूरिन. यूरिन के साथ अगर होमोजेनेटिक एसिड रह जाएगा so the urine is going to turn black. The urine will turn black. So that is called alkaptonuria. Normal है या abnormal है? Sir, abnormal है इसलिए तो disorder के अंदर पढ़ रहे हैं. Okay. Cystitis. What is cystitis? Itis मतलब क्या है? What is the meaning of the term itis? Again, inflammation. Inflammation of urinary bladder. देखो, different urinary system में, excretory system में different organ में जहाँ पे inflammation है, the terms are changing. So अगर इंफ्लामेशन है कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो क्या होगा? सिस्टाइटिस. एंड इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल बॉडी ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा. अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकमिंग क्वेश्चन. कम ऑन, व्हाट इज दैट? व्हाट इज द साइज ऑफ द यूरेथ्रा इन फीमेल? वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट in the earlier videos on excretory system. What is the size of urethra in human female? Fine. Is it longer or shorter? यहाँ से समझ में आ गया shorter है, कितना shorter है, and what is the size? Just comment me in the comment section. Now, so that is it. So cystitis इसलिए female में यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है. कभी-कभी घर में आपके मम्मी को ज्यादा होता है ये. फाइन, मौसी को ज्यादा होता है. समटाइम्स दे आर फीवरिश. फीवर होते हैं 101 102 तक चला जाता है. सडनली दे आर हैविंग दैट दैट फीवर, और वो फीवर रहता है फॉर 2 to 3 days, और बीच में चला जाता है, फिर अगेन ये बैक करता है. दैट इज नॉर्मली ड्यू टू यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, दैट इज सिस्टाइटिस. कीटोन्यूरिया. यूरिया मतलब यूरिन. When the ketone bodies are present inside urine, what are ketone bodies? Ketone bodies बनता कैसे है? The presence of abnormally high ketone bodies in urine. Ketone bodies बनता कैसे है? By beta oxidation of fatty acid. Beta oxidation of fatty acid. I think you know what is alpha, what is beta, carbon chain. So beta oxidation of fatty acid में अगर वो टूट जाएगा तो बनेगा एसिडोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड और एसीटोन.
These three together are called ketone bodies. अगर यूरिन में ये तीनों कंपोनेंट मिलेगा, that condition will be called as ketonuria. That condition will be called as ketonuria. Again, in my other channel, in the channel where I send you the shorts in the form of questions, prolonged fasting condition. A person has been in a fasting condition for say 7 days. What is that? How doctor is going to understand that this person has been in this condition? यूरिन में क्या कंटेंट आ जाने से समझ में आएगा कि ये prolonged fasting condition में था? Fine, check over there. I have asked that question and you have answered it. Check that question. Okay. Now, the last term is about disorders. The last disorder is about polyuria. The last disorder is about polyuria. What is poly? Poly means many. Many urea means what? Urine का content ज़्यादा. Excessive production of urine due to decreased ADH levels. Decreased ADH levels से कौन सा disease होगा? ADH का काम क्या है? We have earlier discussed in the earlier topics. ADH का काम है, it helps in reabsorption of water. It helps in reabsorption of water. So अगर ADH ज़्यादा secreted हो गया, तो reabsorption ज़्यादा होगा, तो यूरिन क्या बन जाएगा? Concentrated. The urine is going to become concentrated. अगर ADH कम रिलीज हो गया, if the ADH is released in less quantity, what is going to happen? Urine, water reabsorption घट जाएगा. Urine is going to become dilute and urine is going to become more. Urine dilute भी बनेगा और ज़्यादा amount होगा urine production, and that is called polyuria. And what is the name of the disease? Diabetes insipidus. My next question and last question to you. What is the other term for ADH? ADH का और एक नाम क्या है? आप बोलोगे vasopressin. मेरा क्वेश्चन ये नहीं था. What is the other term for it? What is the other term for it? Okay, that's all about the disorders of excretory system. Stay tuned, stay healthy, above all, start solving questions. All the best.